So hi guys, today you saw that morning the market was very good before 12, and then from 12 o'clock till maybe 3 o'clock you can say that it was a SL hunting, and then at the end of the day up and down, up and down, and that also you can say that scalping was going on. And 1998 that was the weekly bottom जहाँ से Nifty break नहीं किया, and tomorrow is a white CPR. So white CPR itself tells you that close down your account and sleep. So I will just tell you technically what can happen tomorrow in our market. So a little bit ascending CPR. It is an ascending CPR and it's a white CPR. White CPR means the market will be like this. That's all. Na mera na tera, and your SL will go on hunting very badly. You'll be crying. Khun ki आंसू. Okay, tomorrow maybe the like moral of the story or conclusion of the market is खून की आंसू according to me. So कल खून की आंसू देखने के लिए ready रहना. That's what I can say. And don't cry. अरे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. So maybe tomorrow you can expect a खून की आंसू. And if the candle opens upside, like above CPR, so till you can say that yes, अभी भी uptrend is like intact. Or else अगर वो यहाँ पे नीचे खुल गया, then you can say that downtrend might be like नीचे आने की संभावना है. That's what you can expect in the market. So nothing special कल के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है. That's what my feeling says. But yes, one scenario is that because a lot of companies results were there. So 31st October है, वो एक chance है, like हो सकता है, like what's that called, news based market. अगर वैसा कुछ हुआ तो उड़ेगा या तो गिरेगा. That's what I feel. So tomorrow the same. If the first candle is opening somewhere over here, okay. If the first candle is opening somewhere over here, if it doesn't break R1, it will go back to the CPR. Or else if the first candle opens over here, what you have to see is या तो top central pivot line को break करना चाहिए with a very good green candle, या तो bottom central pivot line को break करना चाहिए with a very good red candle. Then you can expect the movement in the market. नहीं तो it's a no trade zone. So कल अगर यहीं पे candle खुल गया, it's a no trade zone. Got it? And maybe अगर morning pattern हो, गैप अप ऊपर होता है या गैप डाउन होता है, जो भी मिलता है सुबह सुबह मे बी अराउंड 9:45 तक गेम विल बी ओवर, उसके बाद रोने वाला है. दैट्स व्हाट आई फील. सो द टिपिकल व्हाइट सीपीआर एंड द वन हु हैज गॉन थ्रू द 50 आवर्स ऑफ लर्निंग वीडियो, उसको मालूम रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट सीपीआर. सो ऐसा कुछ मेजर मूवमेंट नहीं है. बढ़िया 19200 निफ्टी इज पॉजिटिव, नो डाउट. निफ्टी पॉजिटिव है, इसके लिए मार्केट खींचा अकॉर्डिंग टू मी. सो निफ्टी अगर कल ओपनिंग 19200 के ऊपर गया, if it just withstand, तो ऊपर जाने का है संभावना. lot of things are there in that. So R1 के ऊपर जाना चाहिए, मे बी R1 या S1 पे उधर नाचेगा, then you can get something. नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा कल. And 19,000 psychological figure, it's like very good. बहुत कुछ है उसके अंदर 19,000 पे. So 19,000 नहीं तोड़ेगा, market will not drop down. For going up 19,200, 19,359 is what you can expect if it loves to go up. If any news based market is there, so R1 के ऊपर ही ट्रेंड चालू होगा, याद रखना. R1 के ऊपर ही, okay, R1 के ऊपर ही ट्रेंड चालू रहेगा. And Bank Nifty. So Bank Nifty also the same thing. White CPR है और same ascending CPR है. So Bank Nifty also nothing special. Same logic, same diagram, but थोड़ा सा engulfing है. There's a little bit of engulfing कि हो सकता है कुछ. मतलब it's not engulfing, but थोड़ा सा like you can say 5 point up and down. So the same logic what I told in Nifty, the same thing comes here also. But यहाँ पे the game is एक तो 43 साइकोलॉजिकल फिगर के ऊपर कैंडल ओपन होना चाहिए, सो दैट यू कैन जस्ट से दैट इट्स पुलिंग अप टू 43,200 और मे बी अगेन इफ इट जस्ट गोज अप आई विल बी लाइव इन द मार्केट. अगर 43 के ऊपर नहीं ओपन हुआ, देन यू कैन से दैट बेरिशनेस विल बी देयर एंड मे बी बॉटम पे गिरने की कोशिश किया. सो ये बॉटम पे जाएगा तो 42,500 आ सकता है, वो टॉप पे गया तो 19,500 आ सकता है. तो विच एवर इज पावरफुल कैन रूल द मार्केट टुमारो. दैट्स ऑल. सो दैट वाज टेक्निकली व्हाट यू कैन सी इन द मार्केट. एंड यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू लाइक फ्लाइंग स्नेक, because if it reverse of the news base, so flying snake हो गया, उल्टा गया. That's all. So let's see tomorrow what can happen. So white CPR effect. So what I feel is like tomorrow you can find out what I feel. एक सीधा सा ऐसा रेड कैंडल, फिर सीधा L pattern. So tomorrow I am expecting L pattern. L pattern का मीनिंग क्या है? ऐसा हो सकता है ऊपर से नीचे एक बिग रेड कैंडल मॉर्निंग. After big red candle, market will just lie down. That means it is telling you to shut down your account and sleep, or else if any major support or resistance is broken, then only can say that हाँ भाई कोई movement होने वाला है. So I'm expecting L pattern tomorrow.
And one more thing, guys, L pattern, flying snake, Evo snake, something is happening. But you have to just go with the logic of jail bar. So if the snake pattern ka jo morning ka aaya niche 30 point deke gaya na, and then it took a reversal, right? At the bottom, because it took a reversal from Virgin CPR, and I was just shouting, Virgin CPR hai, yellow arrow bhi aaya, and then suddenly it pulled up from that Virgin CPR. So CPR is first logic, you know. If you know the CPR perfectly, then jail bar comes. So CPR का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद ही जेल बार आता है. बढ़िया, अगर पूरा मर गया कुछ समझ ही नहीं रहा है, some time like what happened today, चुपचाप जेल बार पकड़ के बैठने का. And if it just the jail bar goes in zero line, check out with 15-minute time frame, वो क्या बोलता है, उसका एक क्लैरिटी लेना. That's what I can tell. And whatever the logic I am doing and whatever the diagrams I'm doing, don't blindly follow it. चुपचाप मेरे को भी सुनते रहना, because I was shouting 1998, and you saw that didn't go that below that और सीधा जंप मारा एंड में. And if nothing is happening in the market, if the market is going sideways like this, remember that. So a lot of people have a problem. क्या करना चाहिए? It will make one range. एक range बनाएगा, वो range को तोड़ने देना. Or else if you are a scalper, if you are taken a C also, ऊपर गया, that's good. अगर नीचे आया, again it will go up in the sideway market. So sideway market में don't डरने का नहीं. वो नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. Likewise, it will go on giving you 10 points. So if you are a faster finger pass, then yeah, it's very good for you to take that 10 points and exit the market. That's what I can do. So that's all for the days, guys. So let's see, tomorrow might be, you know, like रोने वाला दिन, and maybe Wednesday might be थोड़ा सा. Wednesday को है गेम. अगर market L pattern चले गया, then Wednesday suddenly drop down मारेगा. अगर ऐसा हुआ तो कल. So that's all for the days, guys. So meet you up tomorrow 9-7 in our live market, and let's see. And don't blindly follow anything. And 12 बजे तक सबको मिला. जो नहीं ले पाया वो बर्बाद हो गया. That's what I can tell. Bye, guys. See you. And देखते हैं अभी कल क्या बोलता है अपना बाजार. That's what I can tell. And ब्लू भी रुलाएगा, या तो आई थिंक ब्लू गेव टुडे, हाँ एंड में दिया रहेगा. अगर रुलाएगा तो फिर रुकना पड़ेगा, मे बी फॉर वेडनेसडे गेम टू वॉच आउट. बाय गाइस, सी यू.